Welcome back to Ingwa News. The Goa Pradesh Congress Committee observed the 61st death anniversary of the Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. The event saw the presence of AICC in charge Manik Rao Thackeray and Dr. Anjali Nimbalkar, AICC Secretary in charge of Goa. Today, paying tribute to such a man in a state like Goa is really a proud moment for me, because a place where people throughout the country are demoralized by telling all different sorts of stories about his life, lies about his life. They forget to tell about the development like IITs and IIMs which was formed by him. And I proudly remember him because as a doctor, a person who has studied in a government college and a person who has taken his degree in a municipality medical college only knows the value of what the first Prime Minister of India has given us. कि जो डेवलपमेंट हम पूरे देश में हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल जी के बदौलत ही पूरे देश में डेवलपमेंट हो चुके हैं। और हम जानते हैं इस देश को स्वतंत्रता जो मिली उसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे अधिवेशन में, उसी वक्त उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्र करके उन्होंने नारा दिया और उसी को लेकर उन्होंने उस तरीके से जो आंदोलन चलाया पूरे देश में, तो 9 साल तक उनको जेल में इंग्रजों ने डाल दिया था। ये सभी हम जानते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर हुए उसके बाद उन्होंने इस देश की जो संविधान है वो पूरी तरह संविधान के तहत काम होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत सभी जो गरीब है, वंचित लोग हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। यही सामने दृष्टि रखकर उन्होंने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की बात की है। एक महान मनीस जाणे या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याक आपलो योगदान दिलो। ताज्या उपरांत जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्ना या देशान एक सुई सुद्धा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली। अशा परिस्थितीन ताणी देशाचो कारभार सांबाळ्ळो। ताणी खूबशे इन्स्टिट्यूशन्स, IIT असतले, एम्स असतले, इतर काही इन्स्टिट्यूशन्स, डॉक्टर कार्लोस फरेरान उल्लेख केलो की 1950 ताणी प्लॅनिंग कमिशन हाडले की एव्हरी 5 वर्साक प्लॅनिंग करून बाबा कशे हो देश मुखार व्हरप, हे तांचे विचार, तांचे आयडियाज आशिल्ले। If Pandit Jawaharlal Nehru was there today, all his ideas of principle, would we have bowed down? That is why आज ताचे relevance, his leadership quality. जेन्ना ताणे टेक ओव्हर केले, श्री MK शेखरान सांगले खूबशे ताचे क्वालिटीज जे आमचे आज 200 MLA सांगले, श्री कार्लोस फेरेरान रिगार्डिंग प्लॅनिंग कमिशन, या सरकारान कितें केला? चेंज केला, नावच चेंज केला, नीती आयोग, इतलेच आणि काय ना। बट व्हॉट फाउंडेशन वॉज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू is what is holding the country today in such a way की आम्ही जेन्ना घर बांधता, बिल्डिंग बांधता, आम्ही सदां म्हणटा फाउंडेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय। ते फाउंडेशन पळय ताणें घाल्ले, त्या खातीर आयज आमचो देश मजबूत आसा। फक्त हांव एकूच सांगता, आम्ही ह्यो आयडियल्स आनी ताचे विचार आशिल्ले जेन्ना आम्ही फुडें व्हरतले, that will be the tribute to Pandit Jawaharlal Nehru. Today, as we stand here, without repeating what previous speakers have said, we stand to pay tribute to a great leader, a great son of our nation, who has not simply fought for freedom of our nation, but who has lit the torch which we need to carry forward to ensure that the dark days are not brought upon us by devious means, by subjugation of the constitution, by subjugation of the democratic rights and the freedoms available to a citizen, something which Pandit Jawaharlal Nehru cherished by saying, where there is a free mind, there is a road ahead. Because unless you have that kind of thought which is free, no one can have new ideas which bring in production,
and prosperity. अशें न्ही की आतां तो त्या टायमार तेका भरपूर कितें करूं येता आसलें, एक बॅरिस्टर भरपूर कितें करूं येता आसलें, पण तेणें सादगी रावले, खादीचे कपडे वापरून तो रावतालो एक पंतप्रधान. थोडेशे ऑपोजिशन म्हणटा की सरदार वल्लभभाई पटेल पंतप्रधान जावपाचे. हो चवथीत आनी पांचवेंत निबंध आसता न्ही बरोवपाचो, तसली हो निबंध हे ऑपोजिशन करूंक सोदता. हांव तुका इतलेंच सांगता, सरदार वल्लभ पटेल, नेहरूजी, गांधीजी, आंबेडकरजी आणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे सगळे एक मताचे असले, गांधीजी सुद्धा एक मताचे आशिल्ले. त्यांची मतभेद असू शकता पण मनभेद केन्नाच जावना, म्हणून तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन दिलें आमकां. भारताचो आधुनिकपणा करपाक दवरले हे सगळे ते विचार आसले, तेंचे एकूच ते भरलेले आसता देश सेवा.